Thank you so much for showing up on Sundays. And thank you so much for Dr. Seema. See, she's in OT. She's just done with the cesarean. And this is your opportunity. I'll, ask Dr. Seema to make you aware what is this for, why are we starting this, and what's intention behind, for starting this Sunday half an hour live session with all of the mothers, blessed moms, star moms, any mom who need. It's not, don't keep it up to you. If any in your family member need any help, they can join in this forum. So yes, over to you, Dr. Seema. Maybe you can start and give them a little bit of background around what it is all about. You want to wait for 5 more minutes if more people log in, or we should start We right we away? will start also because we are having a hard stop at 12, right? Okay. So let people keep on joining in. Maybe we can at the end we can again repeat or something like that. We can think of it, but let's honor the people who are on time, Ankita and Ravneet. Okay. So, good Ritika. morning, everybody. First of all, a very warm welcome to all the attendees who have spared their precious time from their roller coaster day of Sunday with little babies, family commitments, and they are here with us. And I really appreciate that, though few people have joined, but I think this is a little kickstart to the whole concept which we want to introduce to our parents would be, or mothers who are already parents of newborns or toddlers or infants. And so this initiative today is part of the concept that we want to give a holistic care to our mothers who who want to become better parents. So Japinder has initiated this concept of inner parenting, and I really love the idea because the aim is to have mothers who are very happy and they are able to balance their professional as well as their personal lives in a smooth way, so that the journey of motherhood itself becomes very fulfilling and a happy journey, so that in the end we bring up children who are very useful individuals and balanced individuals for the society. Because as parents, whatever values, whatever ways of life we pass on to them, if I'm a balanced mom, automatically my child is going to inherit that. So here we are as a team to help our mothers through the journey of pregnancy, through the journey of childbirth, and through the parenting journey in the initial few years till they get hold of the entire thing. So Japinder, that is from my side. If you want to add anything, please do. Thank you so much, Dr. Seema, for letting them know what's the intention is. As Dr. Seema rightly said, that it's um, how do I look at it is like we are the first mothers, being the first teachers, coaches, trainer in their kids' life. If we can give them the right foundation, wherein we know how to manage ourselves, because the kids have only till the age of 10, they only look at you. They don't learn by what you say, they learn by what you do. Like they observe you and they absorb you. So the entire purpose is, being it through pregnancy, being post pregnancy period, which is actually very challenging. हर कोई सिर्फ हमें ये बता देता है. Everybody shows that romantic side of the motherhood. बहुत अच्छा है, बेबी आ जाता है, आप ऐसा कर. But nobody talks about it. Also biologically it brings a roller coaster of hormonal changes, emotions, and a lot of other stuff which nobody talks about and mother doesn't express it. Mother thinks कि अब अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो maybe it's like I'm not a good mother, I'm not capable, I'm not good enough to take care of my child. So many a times these kind of things remain unexpressed and not taken care of that point in time. And what it does is, if you are agitated, irritated inside, that is what my child is getting from me. So it's, being it any phase of journey in your life, for a woman, it's very important to first understand, accept, and guide themselves. And it only happens when you are in a forum, in a community where you are having that mindset that it is a no judgment, no criticism zone. It's just
women coming to help other women to sail through whatever they are going through. So that's a thing. So guys, now I want anybody of you, if you are having any question, please raise your hand and we will be happy to take on your questions now. Japinder, one comment I Yes, want to please. make here is, Yes, please. see, the science behind, trying to help our mothers being more balanced mothers is, as you rightly said, that till 10 years of age, parents are the first role models which children look up to, and very passively or actively they inherit all our behaviors, our mindsets, our way of, tackling situations. So the science behind it is, or the psychologists, they say that children have mirror neurons. So what are mirror neurons? They will only reflect whatever they observe. So a lot of learning of a child till the age of 5 is through observation. Children are great observers. So I feel that if as parents we are mindful of our actions or words, our thoughts, because thoughts are going to manifest as actions eventually. So then you can, very easily mold your child's behavior. So whenever we have a child who is throwing tantrums, let us analyze and introspect. Do we also react like that in a similar situation? Because children have mirror neurons. So if we remember that, I really like that concept, that if I always remember, then I'll guard my behavior, right? Yeah, Exactly. This is whatever you are, looking forward कि मेरे बच्चे को यहाँ ठीक करना है. You have to look कि ये अगर यहाँ ठीक करना है तो यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा. वहाँ ऑटोमेटिकली ठीक होगा. That is how it goes. कि exactly, you yes, don't look at मेरे बच्चे को कैसे ठीक करूं. Okay, my child is struggling with, as you rightly said, this is the age. After 2, there is increased number of tantrums, meltdowns, because 2 साल तक child is like that. उसके बाद development standpoint से भी there are certain changes in kids, and you'll see this is a science backed. National Health Institute has done an entire study on this, which shows that कि 2 साल से 4 साल के बच्चे में the frequency of tantrum will be increased, which is normal. But having said that, वो normal, it doesn't mean we keep it, as is कि कुछ करे ना. No, actually, and there is one of the question. This is Neha, maybe not here yet, but she has posted a question in our Google form, and which was exactly on this topic, which you just touched base, Dr. Seema, tantrum. Because हम लोगों ने इतना कर लिया tantrum, even we are doing tantrum. Even we do tantrum. So when the kid is doing that, there is unaddressed underlying thing, which either it could be frustration, it could be anger, it could be any other feeling which child wants, and बच्चा आपको देख रहा है कि यहाँ पे regulatory skill चाहिए. Why child is doing it? There is something he has asked and he is not getting it. जैसे हम कुछ बोलें हमें ये चाहिए और हमें नहीं मिलेगा, तो that no which is coming to me, I'm unable to accept that. And that's a thing which I even tell a lot of mothers कि अगर आपको सिर्फ से basic concept पता है, उस time पे your child is looking up to you, mama, you have said no to me, what shall I do, how shall I manage this anger or frustration, this feeling of mine which is coming when I'm getting your no. तो अब बच्चा जोर जोर से either that child will shout, either that child will start to throw things, and वो पूरा घर 5 मिनट के लिए सिर पे उठा लेगा, and what will say is क्या है, क्या बड़ी बात हो गई, एक नो ही तो बोला है. और आई गेट एजिटेटेड विद दैट थिंग कि लोग देख रहे हैं, घर वाले देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, तो इसको चुप कराने के लिए मैं वो चीज दे दूं. व्हाट वी डिड, पहले हमने ना बोला, उस बच्चे को वो नो एक्सेप्ट करने का, बिकॉज दैट वाज अ फेस टू हैड दैट रेगुलेटरी स्किल, इमोशनल रेगुलेटरी स्किल. तो उसमें मैं अपना आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल माई इमोशन इन दैट मोमेंट, एंड आई सेड कि पकड़ो और चुप हो जाओ. एक्चुअली दैट्स नॉट हेल्पिंग दैट चाइल्ड. Now, for that, again, as you said, mirror neurons, you have to see when I am getting angry, when somebody is saying no to me, how I am reacting. तो 5 साल की एज तक बच्चा इज जस्ट ऑब्जर्विंग कि अगर पापा को गुस्सा आ रहा है, पापा क्या कर रहे हैं, मम्मा को गुस्सा आ रहा है तो मम्मा क्या कर रहे हैं, कौन कैसे शाउट करता है, क्या करता है, एंड किड इज जस्ट डूइंग दैट. And that's why it's very important. And again, another concept is your child and the behavior are two separate things. We very easily say ये गुस्से वाला है. No, the child is good child, you are a good mother. That anger is just a behavior. Don't attach it at a label, because that it builds your entire self-image, self-worth of the child for the entire life. So that is where
I mean, lot of thing I see that if mother has this insight कि मेरा बच्चा tantrum कर रहा है, and be quiet, how to keep calm in that moment, let that phase pass. Don't try to do anything in that tantrum moment, because this is one of the question I'm addressing, guys. अब जब वो बच्चा tantrum कर रहा है, हम भी करते हैं, your brain is in fight or flight mode. या तो वो fight back करेगा या वहां से जाएगा. So that brain is shut down, and that's the moment when we are teaching. All the teachings are done in that very moment. कैंडी तुम्हें मिल जाएगी, चुप कर जाओ, ऐसे बच्चा कुछ नहीं सुन रहा, बच्चा कुछ नहीं सुन रहा. लेट दैट 5-10 minutes pass on. Only thing which you can do in that moment is keep yourself calm. How? You have to have some mantra ना, अपने आप को काम रखना is a big thing in that moment when your child is. Just tell yourself, my child is a good child, I am a good mother. This is just a moment of matter. उसको मैंने ना बोला है, my child is learning to accept my no. Because both of you going high on emotions, when you go high on emotions, your intelligence goes low. दो जने एक साथ इमोशन पे हाई होंगे, इंटेलिजेंस इज नो वेयर. योर चाइल्ड इज अ चाइल्ड, यू आर नॉट अ चाइल्ड. सो जस्ट इन दैट मोमेंट रिमाइंड योर सेल्फ, दिस इज अ मोमेंट. मेरे को एक मौका और मिला अपने बच्चे को इमोशनल रेगुलेशन स्किल देने का, एंड दैट ईज यू आउट. So yes, having that said that on tantrum, we do have a separate entire masterclass on this. But I would highly recommend, if anybody who's present here is having any question, please guys raise your hand and ask your question. I can Deepika. see Dr. Garima is here with us, and we have Kritika also. So I think we can only share our personal experiences too. They may not seem a problem to us, but anything which has bothered us, any emotional or personal situation. Yes. So having one more thing, if this thing is, it's very yeah, Kritika is having a question. Yeah, Kritika, please go ahead. My question is to both of you, why to डॉक्टर सीमा, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं. आप इतनी सारी मदर्स से मिलते हैं और सबके इमोशंस इतने हाई और फैमिली के भी इतने रहते हैं. देन हाउ डू यू रिमेन स्टेबल इन दोज मोमेंट्स? आई अंडरस्टैंड कि बहुत एक्सपीरियंस से हो गया होगा, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था तो हाउ डिड यू स्टे स्टेबल? सेम इज टू जितेंद्र ऑल्सो. जैसे फैमिली में कुछ ना कुछ डिजीज होती है तो आप अपना जो फोकस थोड़ा लूज कर जाते हो. मतलब सेम ही है क्वेश्चन आप दोनों के लिए. So Kritika, my answer to the question is, देखो, I'm very empathetic as an individual overall also. So I get very emotionally, connected with any beggar, anybody. So as a personality, you can say that is my nature. मेरा स्वभाव है ना? So whenever any mother walks into my OPD from day one, then I only go back to my own pregnancy. And I relate very well कि यार ये बिल्कुल, the person is not good or bad at this moment, वो emotions are expressing it in that way. So I just have to be stable, I have to reassure them, and I have to give them that confidence that the journey is going to go over it is just transitory. So I do not entangle with their emotions, है ना? So I am at my peace, and I know कि since I've been through it, so I think that has helped me. As a mother, I have had 2 children, gone through those 2 pregnancies. So I never judge them कि यार ये इस समय हाइपर हो रहे हैं, पर मुझे पता है कि ये हॉर्मोन्स प्ले कर रहे हैं. सो कहीं ना कहीं हमें वो हमारी साइंस की नॉलेज हेल्प कर देती है कि हम वी आर एबल टू एक्सेप्ट देयर बिहेवियर. And at the same time that okay, if I'm stable, then only I can calm them. तो मतलब मैं ही एजिटेट हो जाऊंगी तो फिर मैं सामने वाले को कैसे रीअश्योर करूंगी? जो लेबर को गो थ्रू कर रहा होता है, ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में होता है, इतने एंजाइटी में होता है. सो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तो मुझे ऑपोजिट साइड जाना पड़ेगा ना, उसी की साइड जाके तो आई एड ऑन टू द स्ट्रेस, है ना? And at the end, we know it is going to be very fulfilling, and it is only going to you just have to tide over that moment. So I feel बड़ा अच्छा अभी जपिंदर ने बोला कि when the child is throwing that tantrum, सबसे पहले तो हम ये एजिटेट, ये कैसा बच्चा है. सो इफ वी हैव दिस थॉट, नहीं बच्चा अच्छा है, इस मोमेंट में नो नहीं एक्सेप्ट कर रहा, सो यू विल डिटैच फ्रॉम दैट एजिटेशन ऑफ योर्स, नो. सो ऑटोमेटिकली देन यू विल बी एबल टू हैंडल इट. आधा टाइम तो हम ओहो ये कैसा बच्चा हो गया यार हमारे पास, ऐसा कैसे बिहेव कर रहा है. सो आई थिंक गोइंग थ्रू द पेरेंटिंग वी ऑल इवॉल्व, and I
owe a lot of credit to my elder child, my daughter. I made lot of mistakes with her, but by the end of the journey, okay, if we learn to evolve, just say you are part of the session today because we want to learn, we want to grow. If we have that insight, we will all be able to get over with it, है ना? So, oh, yes, very rightly said. So, Kritika, another thing, जैसे आपने ये भी बोला, आप ये वाली चीज करते हैं कि जब आपकी फैमिली में कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स, बिकॉज वी आर इन दैट जर्नी, कुछ ना कुछ चलेगा, हमेशा लाइफ में चलेगा, बिकॉज इट्स नॉट दैट कभी लाइफ इज कंप्लीटली सॉर्टेड, आज जाके हंस लो, आज जाके कर लो, यू अब जाके जी लो, नो, दैट्स नॉट गोना हैपन. लाइफ विल गो लाइक दिस अरे स्ट्रेट लाइन तो इटसेल्फ सेज यू आर डेड. So we want to be lively. We want to have all these moments, and these are the moments wherein. So I tell you, what is, जैसे डॉक्टर सीमा ने कहा कि जब हमारे पास कोई ऐसा आता है तो we can see the invisible. We can see because उनको सिर्फ वो मोमेंट दिख रहा होता है, but we can also see what is going underneath it. क्या चल रहा है, आइसबर्ग का ऊपर वाला नहीं, उसके अंदर क्या चल रहा है. देर इज लॉट ऑफ अदर काइंड ऑफ थिंग्स, सेल्फ डाउट, बहुत सारा कुछ चल रहा होता है, सिक्योर इनसिक्योरिटीज, कैसे होगा, हम में से कैसे होगा, ओवरवेल्म इन दैट फेज ऑफ योर लाइफ, एंड मेनी ऑफ अस डोंट एक्सप्रेस इट, being getting judged or labeled. So that is the entire concept is express, guys, express, and also help your spouse to also express it. So I'll just take the next question. Kritika, it was really very good question. तो जैसा I'll just wrap up that thing first because I just realized कि मैंने वहाँ पे उसको end नहीं किया. So hope you got it. The more you will go on this journey of knowingness, awareness, you will be able to handle and you will be able to help other people, because क्या होता है, it's not about me, it's about them, it's their emotion, it's their turmoil, they are just venting it out, they will be fine within 5-10 minutes. वो भी उस टाइम पे वो बच्चे को याद कर लो, हम भी सब टैंट्रम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, there is no one who's not doing it, everybody is doing it. बड़ों का गुस्सा is tantrum. ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, मैम मेरा बेबी बड़ा इरिटेट फील करता है जब उससे कोई चीज अच्छी नहीं फील करते हैं एंड कोई चीज मना कर देते हैं. तो मेरी जान प्रियंका, मेरी बात सुनो, हाउ ओल्ड इज योर चाइल्ड, पहले तो ये बताओ, इफ यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स. ओके, जब तक आप चैट बॉक्स में डालते हो, इसमें मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ. आप अपने यू ऑल्सो आस्क योरसेल्फ 2 years ना, तो डेफिनेटली 2 साल का बच्चा है, मैं उसको कोई चीज मना करूंगी, दैट 2 year ऑफ चाइल्ड कांट बिहेव लाइक अ 30 year ऑफ एडल्ट. बट वॉट वी डू इज वी एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2 साल के बच्चे से, तो वहां नहीं होगी. अनदर थिंग इज, इफ योर चाइल्ड इज गेटिंग वेरी इरिटेटेड, आई वुड हाईली सजेस्ट यू, एक बार आप बैठ के सोचो कि यार कहीं मैं तो बहुत ज्यादा इरिटेटेड नहीं रह रही हूँ. इज देयर समथिंग बॉदरिंग मी वेरी मच नाउ अ डेज, कि मैं उसकी हर छोटी बात पे या घर पे किसी की और छोटी बात पे आई एम जस्ट लाइक अ कोल्ड ड्रिंक, this sorry, मतलब it is just to make it at a lighter note, but it's very important. क्योंकि वो जो इरिटेशन आ रही है ना, एज आई सेड, टिल योर किड्स आर absorbing you and they are absorbing, तो वो जो इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमसे ही आ रहा है. एंड दिस अनदर थिंग, जब उसको चीज नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली जब हमें कोई मना करता है तो वो इरिटेशन आती है. बट हैविंग सेड दैट, यू जस्ट हैव टू लर्न कि जब वो उस मोमेंट पे इरिटेट हो रहा है तो आई शुड नॉट लूज माई काम. एग्जाम्पल, आई हैव 2 kids, 8 years and 4 years. तो 4 years का मुझे पता है कि अब उसको दिन में आई हैव जस्ट, देर इज a certain रूल, प्रिडिक्टेबिलिटी, कि ये इस चीज पे इस टाइम पे हम करते हैं, रूटीन्स एंड एवरीथिंग इज देयर. देर इज अ रूल ऑफ कैंडी, 1 candy a day. ओके, अब उससे बियॉन्ड पता है मुझे, मेरा बच्चा है, ये तो है नहीं ये खा के बोलेगा दूसरी नहीं चाहिए, वाह मम्मी बड़ा ओबीडियंट चाइल्ड हूँ, आपका नहीं चाहिए, नहीं, दूसरे पे आएगा वापस, मुझे पता है, दोपहर तक शाम तक आएगा. सो व्हाट आई से, आई नो बच्चा यू वांट टू ईट बट आई एम सो सॉरी, एक ही मिलती है ना, प्लीज मम्मी आज दे दो, प्लीज दे दो. आई नो माई चाइल्ड विल आस्क ना, मेरा बच्चा इज बच्चा, और मैं उसको मना करूंगी तो वो थोड़ी देर रोएगा, थोड़ी देर करेगा, बट आई कैन clearly understand what is tantrum, what is meltdown, because this is very important to understand. और दोनों को चीजों को अलग करने की एक चीज होती है. अब इरिटेशन से, इसलिए मैं आपको मेल्टडाउन पे बता रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, योर टैंट्रम इज रिलेटेड टू गोल, कैंडी चाहिए, अभी के अभी जाना है, अभी ये चीज चाहिए, ये टॉय चाहिए, दैट इज गोल ओरिएंटेड टैंट्रम.
मेल्टडाउन इज नेवर अ गोल होने की, मेल्टडाउन इज सेंसरी ओवरलोड। कई बार हम बच्चे को पार्टी में ले जाते हैं, वी मेक देम वेयर गुड क्लोथ्स बिकॉज वी वांट देम टू लुक गुड इन द पार्टी, राइट? बट दैट स्टफ घर पे हम उसको कॉटन में रखते हैं और एकदम से वो बच्चा उस टाइम पे उसने पहने, इरिटेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, इरिटेशन इज लिटिल बिट मोर टुवर्ड्स कई बार मेल्टडाउन की तरफ होता है। चीज के लिए मना है तो दैट इज ओके, टैंट्रम चाइल्ड विल ओके। बट अगर मेल्टडाउन है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मेल्टडाउन में आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, उसका सेंसरी ओवरलोड हो गया। पहले तो ये हम पार्टी में पहुंचे, लाउड म्यूजिक, बच्चा कह रहा है मुझे म्यूजिक नहीं अच्छा, मैं और सबसे पहले सबसे मिलो, दादी नानी चाची मासी सबसे मिलो। और अगर योर चाइल्ड इज नॉट लाइकिंग दैट फिजिकल टच ऑफ एवरीबडी टिल द 6-7% कम, चाइल्ड विल स्टार्ट क्राइंग लाइक एनीथिंग। अभी तो ठीक था, अभी इसको क्या हो गया, पापा को पकड़ा रहे हैं, दादू को पकड़ा रहे हैं। एक्चुअली वो सेंसरी ओवरलोड टच से हो रहा है, बच्चे का सेंसेशन और बढ़ रहा है, राइट? उसके बाद म्यूजिक चलता सॉरी है। Chapinder, sorry to interrupt. So what I can understand is कि tantrum और meltdown को पहले हमें segregate करना है before giving our एग्जैक्टली, response, है एग्जैक्टली, ना? बिकॉज तो और मेल्टडाउन इज meltdown क्या है? meltdown is कि child overwhelm होके ऐसे behave कर रहा है. That is what you are trying to say? एग्जैक्टली जैसे मदर्स Okay, होती है ना, आपने okay. देखा होगा पार्टी में यूजुअली छोटे बच्चे आते हैं, तो वो जैसे ही आते हैं हम्म. सब लोग उनको पकड़ना चाहते हैं। बट इफ So दैट that is सेंस, not a tantrum. उस नो नो समय नो वो नो 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 tantrum नो नहीं है. Okay, नो so यही नो, है कि we दैट्स have to segregate the response first, है ना? हम तो same एग्जैक्ट, ही react कर देते हैं दोनों नो चीजों नो को. नो, हाँ. दैट इज वेयर आपने पार्टी में लोगों को देखा होगा कि वो बच्चा एक ऐसी मोमेंट में पहुंच जाता है जहां पे उसके बाद उस वो ऐसे रो रहा है, उसको पता नहीं है कि एनवायरनमेंट क्या है। आप देखो कि हाथों से निकल निकल के जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली जितना हम उसको वो करें इन दैट मेल्टडाउन देयर इज सम काइंड ऑफ अनईजीनेस बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द सेंसरी ओवरलोड। सेंसेस, 5 सेंसेस में से कोई ना कोई ओवरलोड हो चुका है। एंड द ओनली थिंग यू कैन डू इज प्लीज रिमूव दैट चाइल्ड फ्रॉम दैट ट्रिगर। वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल आई गिव, लाइक फॉर माई सन, द कुकर का वेसल इन घर पे ना, दैट इज उसका ईयर को सेंसर, तो वो ऐसे करता है, दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन फॉर मी, आई कैन मेक आउट कि इसके ये जो विसल है, ड्रिल है, तो इसको सेंसरी ओवरलोड होता है ईयर का। सो व्हाट आई डू इज, सरताज कुकर की विसल होने वाली है, आई इन्फॉर्म हिम, आई मेक हिम ईज, तो यहां मत आना बिकॉज यू विल गेट दैट थिंग। पार्टी में बच्चा बहुत अनकंट्रोलेबली रो रहा है, आप अवेयर मॉम हो कि यार सुबह से घर से अब इसका टिपिंग पॉइंट आ गया, अब इसको कोई आइसक्रीम इस कलर की नहीं चाहिए, कोई इस कलर का बैलून नहीं चाहिए, ही जस्ट वांट दिस अनईजी फीलिंग, रो रो के बॉडी से बाहर। और आप देखोगे बच्चा इमोशनली ड्रेन्ड हो जाता है, वो रो रो के थक के सो जाता है। दैट्स नॉट अ टैंट्रम, दैट चाइल्ड इज नॉट क्राइंग फॉर दैट बैलून, नॉट फॉर दैट आइसक्रीम। there's a sensory overload either of because of music, either because of that constant touch, कुछ ना कुछ बच्चे का पूरे दिन का। then you have to just see पूरे दिन से हो क्या रहा है जब तक हम पार्टी में पहुंच ठीक है. जाए। Japinder, done. So we have got a very good message today from this session कि पहले हमें दोनों चीजों को identify करना है, फिर address करना है, और address कैसे करना है, I think you will have to take one session on this. So I am intervening because we have a very good question from the audience. हमारा Exactly. time 10 minutes ही रह गया, आप वो देख के उसको answer करो. Yeah, sure. What is it? Postpart, my first pregnancy, I can see. Okay, let me just look at that question. I'm not able to see that. So should I read it for you? Yeah, please, if you can. So There's this some glitch. Dr. Garima has asked कि my due date is April. I have a 6-year-old daughter. During my first pregnancy, I suffered postpartum depression. I kept on crying. So now I'm worried how I am going to tackle this time with my daughter if she feels ignored. Yeah. So very beautiful question, Dr. Garima, and that is one thing which is will come. The first child will feel ignored when the second one will come. There will be a lot of emotional things going on with the first child, right? So this time what I'll suggest you is पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, लाइक ब्लूज एंड डिप्रेशन में यही डिफरेंस है ना। अगर आके वो चले जाते हैं थोड़े दिनों बाद, वो इमोशनल थिंग्स गोज, दैट इज अ ब्लूज, ओके, बादल आए बारिश होगी चले गए। बट इफ देयर इज अ कांस्टेंट सैडनेस, यू फील लाइक कि मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना, डिटैच और बैठे बैठे अपने आप रोना आ रहा है, दैट्स अ कंप्लीट डिप्रेशन फेज ऑफ योर्स, राइट? So what I want to you is like April, you still have a lot of time. Start working on this thing. Start telling to your child, because I also had the same way. I was having the younger one, तब मेरी ये बेटी 4 साल की थी. But if you start from now only to talk about and make your child, this elder one, more expressive ki beta, never think this is going to happen, mama loves you, lot of things you can start from now onwards, which will ease that phase for you and your daughter. So if you want anything else, you can get in touch with me. I'll
rightly said, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, there's a very beautiful concept which I talk, sibling वाली चीज. Announcing a sibling to your elder child is like I'm getting a second wife. Okay. That kind of, सारी फैमिली खुश होती है, सारे बोलते हैं खुश हो तुम्हारा भाई बहन आ रहा है, खुश हो तुम्हारा भाई बहन, but that's accepted. Those two are separate individuals. Everything is going to be shared. Mom, dad, toys, everything. And another thing, आप बड़े हो, आप समझो, आप बड़े हो, आप समझो. That's another altogether a different game, I tell you. And I will highly recommend Dr. Garima, if you can take, and if there is any question, you can anytime reach out to me. I'll give you exactly how to, help your daughter. Elder one के साथ अभी से काम करना शुरू करो, so that you don't land up into the same situation. When you deliver the second child, both of them will need lot of attention. So being through that phase and being through aware, and I've just gone through, so I'll be more than happy to help you on that. Yes. So depression के लिए please keep on expressing your feelings. That is one thing I would really highly tell you. जिसके साथ भी आप बहुत close हो, don't keep that sadness, anything, any unexpressed emotion अंदर नहीं रखना. उसको कहीं ना कहीं express करो. Find out people whom you feel secure with, whom you feel कि नहीं judgment होगा, कुछ नहीं सोचेंगे, दो बच्चे नहीं समझ, anything. Japinder, देखो, But I have, think before we conclude, sorry, we have 3-4 yes, minutes you have left. to. So I want कि जितने थोड़े से हमारे attendees, maybe we have 4 people, maybe we have 5 people, but those who have attended the session today, let them be the torch bearers. The aim of today's session is we want to spread this message to the community that we have a team here who is willing to walk an extra step and come and hold your hand and guide through these emotional situations. Because as you rightly said, if we do not address these emotional turmoils and people are not able to express it before their family members, for the fear that they will be judged, that they are not well equipped for the parenting part, and ये कैसे आपसे नहीं हो रहा, हमने तो इतने बच्चे पाल लिए, हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उस फियर से बहुत सारे मदर्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते. So I think then they can come for this professional help, since your team as a resource team can be there. वो directly आपके साथ connect कर सकते हैं और आप उनको एक expert professional advice दे सकते हो without getting into the judgment part of it. So we are Exactly. trying to establish a holistic care bundle where people know whom to reach out in case of need. सो मेरा तो यही मैसेज है आज के ऑडियंस को कि एटलीस्ट यू बीइंग एन इनर पेरेंटिंग कोच, है ना, मुझे भी एटलीस्ट आज पता है कि हाँ, अगर मेरे पेशेंट को कोई इमोशनल टर्मोइल आ रहा है तो मैं जतेंद्र का नंबर शेयर कर दूं कि भैया शी इज देयर टू हेल्प, शी नोज हाउ टू हेल्प, है ना. सो मेनी टाइम्स आई वांट टू हेल्प, पर मेरे को भी ठीक है, अपना गायनी बहुत अच्छे से मैं मास्टर हूँ, लेकिन इमोशनल इश्यूज को कई बार मुझे भी नहीं समझ में आता है इसको कैसे सर्कमवेंट करना है ना. So that is the message we want to give to our audience today. Please help your friends, help your family, help yourself, and come forward and ask for help whenever you feel you are in a trouble. Exactly. So guys, this is a Q&A which we'll be hosting every Sunday till 11:30 to 12. So this is your opportunity to come with all the questions you are having, and please, as Dr. Seema said, let all other mothers who have not shown up today, maybe it's just the beginning, but do inform everybody in your vicinity that this is something happening, to help each one of you, and anytime you can reach out to us. We are just a message away, right? Thank So you, Japinder, and I really love the zeal you have to help our mothers, and that makes me also कि चलो यार मेरे को भी half an hour spare करना चाहिए. Though I also feel for the mission, but as you see, OT से आके कई बार ये juggle करना मुश्किल होता है. But I think together as a team we'll be helped to make our mothers more happy parents. Thank you so much. Your presence make a lot of difference, Dr. Seema. So it's Thank you. you It's a just pleasure. coming It's a pleasure. on. It's a lot of लोगों को आपको देख के. It's not always what you say. It's always your presence make a lot of difference. ना होता है ना कि आप आ गए हो, उससे ही बहुत लोग they will feel. I hope a lot of mothers would agree with that. So And that's why so we'll Kritika's. share the recorded session. जपिंदर, this session जो एक तो शुरू में हम करेंगे, हम recorded share करेंगे, बाद में तो चलो live वाले ही we will encourage people to participate in live sessions. Okay. But let's share the recorded link also, so that at least people know what we are trying to do. Sure. We'll post it in the group.
ना ड्राइव पे हाँ डाल के विल पोस्ट इट, नो वरीज, है ना, आपने हाँ रिकॉर्ड जी, किया होगा ना? yes yes it is getting recorded, yes we do have it, ठीक है, हाँ so we'll जी, share it so that more people will get interested. Yeah. sure, okay, thank you so much Dr. Seema, thank you Kritika, all the lovely moms, bless you all, love you all, stay blessed, enjoy your Sunday guys, bye bye for now, take good care of yourself and your family, thank you so much for joining, bye bye for now. Thank you everybody, thank you. Yeah.